there is a window function called lead, and if I put login date. Hi everyone, I'm back with the new video. So आज के इस वीडियो में हम लोग SQL का एक अदर प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन का बात करने वाले हैं. So here we have to write a query to find the number of users who visited regularly for 2 consecutive days. Okay, तो मुझे ऐसे यूजर्स निकालने हैं जिन्होंने जो 2 दिन लगातार बैडमिंटन कोर्ट आए. Okay, what I can do, अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि द नेक्स्ट डेट, लॉगिन डेट के बाद नेक्स्ट वो पर्टिकुलर प्लेयर कब आया है, अगर मुझे वो पता चल जाए, so we can find use that data to filter out our records. Okay, so what we can do, there is a window function called lead, and if I put login date in lead, so basically what it will do, it will fetch the next login date for that particular user and place it in that particular row only. Okay, over partition by user ID order by login date. Okay, order by login date, partition by user ID and login date. And here you could see that I am getting the login date for that particular next date. Basically क्या हो रहा है, हमें उस particular user ने next कब आया है, मुझे उसका आगे का डेट मिल रहा है. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन नेम इट एज नेक्स्ट लॉगिन डेट. वी कैन यूज अ केस स्टेटमेंट. एक केस स्टेटमेंट का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, अपन चेक कर सकते हैं कि ऐसे यूजर्स जिसका नेक्स्ट लॉगिन डेट एंड लॉगिन डेट के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 ही होना चाहिए. बेसिकली आज का डेट और कल के डेट में सिर्फ एक का डिफरेंस होना चाहिए. आई एम यूजिंग अनदर CT टेबल, CT, आई एम पुटिंग दिस इन अ CT टेबल. सो आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट यूजर आईडी एंड आई जस्ट वांट टू ऐड अ केस स्टेटमेंट. तो केस स्टेटमेंट में वी कैन स्टार्टेड यूजिंग केस लॉगिन डेट. सो वी कैन डू इट next login date is equal to login date plus 1. अगर ये बराबर हो, so what we can do, we can flag that as 1. Okay, then 1 or else 0, end as flag. Okay, if I run it from CT, if I run it, you could see for user ID, here you can see that login date for user 1, the login date is 1st of April, and after that he logged in at 2nd of April. Now you can see that I am getting a user who logged in consecutively for 2 days. Okay, so what we can do, I'm just selecting user ID here. That is what we only want. So this is the perfect solution for this particular query. Okay, hope you like my video.